Very good morning, class 6th. Yesterday I gave you the test of writing skills, and in that I gave you one message writing and one, I think, diary entry. So I have explained you regarding the message, but only 2-3 students have sent me the answer sheet because I have got only 2 or 3 students answer sheets. They have sent me their tests. Rest, where is the whole class? Why you are not sending the test when teachers are taking so much of pain and making tests for you, and you people are not taking it seriously, and all of the class is not sending me the tests? Then what is the use of sending the tests if you are not looking at them, and you are not reading, checking the phones, and you are just taking it easy? You know that your exams are starting from third, and you people are not taking it seriously. Teachers are sending you tests, they are telling you to revise your chapters, but you people are not taking it. You are taking it for granted. And yesterday I have seen 2-3 message writings which students have sent me, and I didn't find it up to date. There are so many things which I need to tell you again. So that is why I'm making one more again video for this revision of message writing. So in this I will point out the main features of the message writing which you have to take care while you are writing a message. First of all, a question is given to you like this. Suppose if I say that you are Ravi Ravina, you have a maths tuition at 4:30, suddenly your brother falls down from the stairs and you have to take him to a doctor along with your father. So you will not be able to attend the maths tuition, and for that you have to leave a message for your tutor. Now this message you have, this is the situation. Sometimes it's a situation and sometimes it is a telephonic message. You attend somebody's message call, and that person for whom that call is, he is not at home. So you take the message and you have to leave the message for the person concerned. So it can be in any form. It can be in the telephonic call also, or we can give you in this a situation form also. So this is a situation given to you, and you have to leave a message for your maths teacher that you will not be able to take tuition today as your brother has fallen down. So now what language you have to use? Here you have to make a box, draw a box, and then in the center you have to write the message. On the left side top, after leaving one line, you will have to write the date and the year. Month you will write it like this only, not 11-12. You will write in words. Then here you will write the time approximately. Now here how will you take the time? Like here it is written 4:30 p.m. So her tuition is at 4:30, and some accident happens at 4. Yeah, like your brother falls down from the stairs, and it almost happened before your tuition time. So it is but obvious. So you will write the time approximately related to that event. So on the right side you will write the time. Then you will write the salutation part, means to whom you are writing. Hello, no need to write hello and all that. You just can write the name of the person concerned, or if that person is elder to you, so you can write respected sir. Otherwise no need. Sir भी लिख सकते हैं आप, ये कंपलसरी नहीं है लिखना. You can just write sir, but respected sir भी लिख सकते हैं. It will not be wrong. Then you have to write it in the reported speech. Like you don't have to copy it here from the question. You have to make it in your own words. Like you will write, I shall not be able to attend my maths tuition class today as my brother fell down from the stairs. I have to take him to doctor with my father. That's it. It should be to the point. Only the main detail has to be given in the message, and at the bottom you have to write your name. That's it. The message is very concise and it should not exceed 50 words. So it is just to give the details of the message. That's it. No extra things, nothing has to be written in the message. You have to take care of this. And the most important thing is that you have to write it in the reported speech. Like, now this is a telephonic conversation.
Here Joy attends the class, that phone, and hello, can I speak to Sharma auntie? So this is for Sharma auntie. She is not at home. Is Joy speaking? Means she is Vicky's mother, right? And she is not at home, and Vicky takes the phone. So she will take the message, and he has to leave home. He won't be able to meet his mother. So definitely he will leave a message for his mother. So how he will write? He has taken the message. Now here he has written the date, and he has written time at this side only. You can write this side only or on the right side, doesn't matter. Message in the center on the top, leave one line, write down the month, date and year, the timings, and then he has written mom. फर्स्ट ऑफ ऑल हु कॉल्ड, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. किसने कॉल किया था? जॉय ने. सो जॉय रैंग अप. पास्ट टेंस में आएगा बच्चे, क्योंकि रैंग किया था. आपने मैसेज रिसीव किया है और आपने लीव करना है, तो दिस मैसेज विल बी रिटन इन द रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है आपको मैसेज, और इसमें पास्ट टेंस यूज़ होगा क्योंकि आपने वो मैसेज पहले लिया था, पास्ट में लिया था, तो प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखेंगे आप. जॉय रैंग, नॉट रिंग. जॉय रैंग अप टू से, उसने क्यों फ़ोन किया था? टू से दैट हिज मदर हु वॉज टू विजिट यू टमोरो won't be able to come as their family friends are arriving from Delhi. So she'll be busy attending to them. That's it. The main reason उनको बता दिया कि कल उसकी मदर ने आपसे मिलना था, वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं दिल्ली से. So she'll be busy attending them. That's it. एंड नीचे उसने विक्की ने अपना नाम लिख दिया. इतना ही मैसेज था और इतना ही देना है. इट शुड बी वेरी प्रिसाइज. नो एक्स्ट्रा वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड. लाइक हियर ही हैज़, शी इज़ नॉट एट होम, इज सो हाउ यू डूइंग. इतना आपने ये सब फालतू नहीं लिखना आपने, जो भी उनकी बात हुई, हेलो हाई एंड ऑल दैट. विक्की टोल्ड दैट हर मदर हैज़ गॉन टू जिम एंड शी विल बी बैक इन हाफ एन आवर. So the Joy says that the message is from my mother. Means Joy की mother का message था. She was to meet auntie tomorrow but she won't be able to make it. Means उसने बताया कि कल तुम्हारी मम्मी को उन्होंने मिलना था, मेरी मॉम ने, बट वो नहीं मिल पाएंगी. She will not be able to make it. What's the matter? Vicky is asking. Is all well? So he says yes, everything is fine. Actually some family friends will be arriving from Delhi tomorrow. So you will not write like this, will be. No, you will write it in your own words. Mother will be busy attending to them. So here just see the changes. Like you will write Joy rang up to say that his mother. rang up किया उसने क्या कहने के लिए? कि उसकी मदर. रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है ना, तो उसकी मदर who was to visit you tomorrow. कि ये अब विकी बोल रहा है ना, अपनी मदर को विकी ने मैसेज छोड़ा है. तो who was to visit you tomorrow, कि उन्होंने आपसे मिलना था कल, बट won't be able to come, नहीं आ पाएंगे. उन्होंने लिखा ना दैट she won't be able to make it. तो आपने यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखना है won't be able to come as their family friends are arriving from Delhi. क्यों नहीं आ पाएंगी? Because some family friends are arriving from Delhi. So she will be busy. Now mom will be busy की जगह विकी ने लिखा she will be busy, क्योंकि थर्ड पर्सन में डालना है हमने ये, और रिपोर्टेड स्पीच में डालना है, तो इसलिए she will be busy attending to them. पीछे के वर्ड सेम लिए हमने, बट हमने नाउन की जगह नाउन यूज़ किया क्योंकि हमने रिपोर्टेड स्पीच में इसको डालना है, इसलिए हम इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. और टेंस जो है हमारा पास्ट में आएगा, तो इसलिए जो वर्ब्स हैं वो भी आप वर्ब्स का ध्यान रखेंगे कि आप पास्ट टेंस में डालें, और ये छोटा सा होना चाहिए बिल्कुल. So once again I am telling you the main features of the message writing. Main features हमारे क्या होने चाहिए? It should be very short, including only the important details and the relevant information. हमने बहुत छोटा सा मैसेज देना होता है, सिर्फ जितने रेलेवेंट है, फालतू बातें हमने उसमें नहीं लिखनी होती हैं. नेम ऑफ द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ रिटन शुड बी मैंशनड. जिसके लिए आप मैसेज छोड़ रहे हैं
टॉप लेफ्ट पे आपने उनका नाम लिखना है, जैसे कि ये है। द डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज रिटन शुड बी मेंशन्ड। डेट एंड टाइम मैंने आपको बोल दिया, वो भी आपने लिखना है। मैसेज नीड नॉट बी रिटन इन सेंटेंसेस एंड सम आर्टिकल्स नीड नॉट टू बी रिटन इन सेंटेंसेस। कंजंक्शंस और वर्ब्स कैन बी ओमिटेड। इसमें डजेंट मैटर इफ़ यू डोंट ऐड कंजंक्शंस और वर्ब्स। मोहित रीचिंग दिल्ली मीन्स आप विदाउट इसे वर्ब्स भी लिख सकते हैं, आपने सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करना है। मोहित इज़ रीचिंग दिल्ली टुडे, इज़ लिखने की नहीं भी ज़रूरत, आप अगर ऐसे भी लिखेंगे विदाउट यूजिंग द वर्ब और कंजंक्शन, सो इट विल बी फाइन। मोहित रीचिंग दिल्ली टुडे इवनिंग एट 5 PM बाय शताब्दी एक्सप्रेस मीन्स मेन जो मैसेज था वो आपने लिख दिया, वो इम्पॉर्टेंट है। जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी दैट इज़ रिटन, and it's not compulsory that you should add all the articles, conjunctions or verbs in it. You just have to write to the point and in the reported speech. Messages can be written for many, for someone to do some work also, for some giving some important information also, or some sort of explanation also. So if you want to apologize to someone, for that also you can leave a message. So it can be of many forms, right? So here Himani has to go to her friend's house to bring a book. Just as she is about to leave, her father calls and asks her to inform her mother that a few guests would be coming for dinner that day. Himani leaves the following message. Now हिमानी अपने फ्रेंड के घर जा रही है बुक लेने के लिए, ठीक है। उसी वक्त हर फादर कॉल्स एंड ही आस्क हर टू इन्फॉर्म हर मदर कि उनके साथ, फादर के साथ कुछ गेस्ट आ रहे हैं आज डिनर पे। और हिमानी वॉज अबाउट टू लीव टू हर फ्रेंड्स हाउस, सो शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर मदर। They have not written the message, but you will write here the message. Write down the date here, 4 PM, day, month and year. Message for mother लिखा है ना, but you will write here mother only. Mother, किसने कॉल किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। Father called to inform you means आप मम्मी को रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपने रिपोर्टेड मीन्स आपने अपने फादर की कही हुई बात मम्मी को बोलनी है, एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू हर फेस टू फेस, तो आपने इसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। जैसे कि आप किसी की कही हुई बात आप जब दूसरे को बताते हैं तो उसमें आप नाउन्स की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। फादर कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट फ्यू गेस्ट्स, यहाँ लिखे ना फ्यू गेस्ट्स, वुड बी कमिंग फॉर डिनर टुनाइट। दैट्स इट। मेन जो मैसेज था उसने एक लाइन में लिख दिया, हिमानी, दैट्स ऑल। अदरवाइज शी कैन ऑल्सो ऐड अ लाइन दैट आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, विल बी बैक इन हाफ एन आवर, कि वो कहाँ जा रही है वो अपना मैसेज भी छोड़ सकती है। नाउ सपोज आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मैसेज राइटिंग। सपोज your mother is out of city and she told you to serve lunch to your father, and by chance you have been invited by your friend to attend her birthday party, so you also have to leave, but you have been given duty to serve lunch to your father, so you just leave a message for your father, like you will write the message like this. You will draw the box, means you can write it on the paper, but when we do it in the exam, so you will have to draw this box. You will write the message, day, date and time, then you will write father, I am going to my friend's birthday party, will be back in an hour, mom is outside, your lunch is on the dining your lunch is lying on the table। नीचे आपने अपना नाम लिख देना है, दैट्स इट। आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ जा रही हूँ फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे, मदर बाहर हैं, एंड योर जो लंच है वो आपका डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, एंड नीचे आपने अपना नाम लिख देना है, दैट्स इट। तो आपने वाइल राइटिंग इट इन द एग्ज़ाम यू हैव टू take these things in the consideration which I have told you just now, that you have to write the message in the past tense plus
इट शुड बी इन द रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना हम, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. जब आप किसी की कही हुई बात अपने वर्ड्स में कहते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो आई होप दैट आई एम क्लियर नाउ. सो this revision of message writing was for all the class 6 students. So be careful in future while writing a message.